audience will be able to describe the anatomy of orbit and list clinical features associated with orbit and give an account of investigations that can be done with orbital disease. So, how do you differentiate between proptosis and pseudoproptosis? First of all, we will be discussing the anatomy. These are the basic dimensions of the orbit that we need to know. The volume is 30 ml. The entrance height is 35 millimeter. Entrance width is 40 to 45 millimeter. Medial wall length is 40 to 45 millimeter. And the last two measurements are important because the distance from the posterior globe to the optic foramen is 18 millimeter, whereas the length of the orbital segment of the optic nerve is larger than that distance. So this is significant because so that optic nerve has enough margin to move so that when the globe moves there's enough space for the globe to move without putting traction on the optic nerve. Then these are the walls of the orbit. There's roof, lateral wall, floor, and medial wall. Roof is formed by the lesser wing of sphenoid and frontal bone, and roof में अगर कोई डिफेक्ट हो तो पल्सटाइल proptosis हो सकता है because of the CSF. Then lateral wall जो है उसमें zygomatic bone है और greater wing of sphenoid बनाता है इसको. इसके अलावा इसकी क्लिनिकल सिग्निफिकेंस ये है कि लेटरल वॉल जो है पीछे ही रुक जाती है और जो हमारा आई बॉल है उसको कम्प्लीटली कवर नहीं करती. तो अगर कोई लेटरल ट्रॉमा होता है तो उसमें आई बॉल इन्वॉल्व हो सकती है. देन वी हैव फ्लोर ऑफ द ऑर्बिट. फ्लोर ऑफ द ऑर्बिट इज फॉर्म बाय zygomatic, maxillary एंड palatine bones. इसकी क्लिनिकल सिग्निफिकेंस ये है कि नीचे ही maxillary sinus पड़ा हुआ है. अगर उसमें कोई कार्सिनोमा है तो वो ऊपर आई बॉल की तरफ आएगा, उसको प्रेस करेगा. और इसके अलावा अगर कोई ब्लो आउट फ्रैक्चर है तो आई बॉल नीचे चली जाएगी. Then medial wall is formed by ethmoid, sphenoid, lacrimal and frontal bones. And frontal bones इसमें ये है कि laminar papilicia होता है, उसके थ्रू ethmoid sinus के थ्रू infection आ सकते हैं. Then we have aperture, superior orbital fissure है, inferior orbital fissure है, optic canal, ethmoidal foramina है, zygomatic-temporal and facial canals है. We all know that superior orbital fissure के थ्रू कौन सी नर्व्स जाती हैं. उसके अलावा annulus of Zinn उसके inferior को कवर करता है. जो out है उसमें lacrimal-frontal trochlear है. Through the Zinn हमारे पास third है, sixth है और nasociliary है. ठीक है. Then optic canal है. optic canal inferior orbital fissure के थ्रू हमारी zygomatic और maxillary आ रही होती है. pterygopalatine ganglion की branches आ रही होती है. Then superior orbital fissure के थ्रू superior orbital vein, superior ophthalmic vein है. inferior orbital fissure के थ्रू inferior ophthalmic vein है. optic canal के थ्रू ophthalmic artery है. ये सारी enter होती हैं. These all nerves and arteries and veins pass through the orbit to enter the eyeball, to reach the eyeball and the surrounding structures. Then next we have ethmoidal foramina. जो ethmoidal foramina है, we can see that it is present in the that the ethmoidal foramina anterior और posterior है. इसमें जो anterior और posterior ethmoidal arteries आ रही होती हैं और जो कि infection इसको भी ला सकती हैं. And then next we have this zygomatic-temporal foramina और zygomatic-facial foramen. इसके थ्रू nerves जाती हैं जो cheek पे open होती हैं. Then next the soft tissues involved in the orbit are periorbita. Periosteum है जो orbital bones को cover कर रहा होता है. वैसे तो loosely adherent होता है except at the fissures orbit और foramina और जो जितने भी canals हैं उनकी margins पे वो अच्छे से adhere हुआ होता है. कोई भी pus की collection होती है तो वो उस जगह पे जमा हो जाता है. Then we have intraorbital optic nerve. मैंने पहले बताया कि intraorbital optic nerve का जो distance है वो ज़्यादा है as compared to the distance from the posterior side of the globe to the orbital apex, so that there is enough margin for the eyeball to move without exerting traction on the optic nerve. Then इसके अलावा अगर कोई proptosis होता है तो उसमें भी जो optic nerve है वो थोड़ा सा late involve होती है.
so that late involved होते हो आपके nerve के symptoms थोड़ा late आते हैं. Then we have extraocular muscles. सारे extraocular muscles orbital apex से originate होते हैं, except for the inferior oblique. सारे pass होके orbit के through they go till the eyeball. Then there was one more clinical significance in extraocular muscles. कि जहाँ on the anterior part of the recti muscles एक septa होता है जो कि connect करता है चारों extraocular muscles को. एक सेप्टा डिवाइड करता है ऑर्बिट को इनटू सेंट्रल सर्जिकल स्पेस एंड पेरिफेरल सर्जिकल स्पेस. सेंट्रल सर्जिकल स्पेस है उसको हम अप्रोच करेंगे जब इंट्राकोनल लीजन्स होंगे, और जो पेरिफेरल सर्जिकल स्पेस है वो एक्स्ट्राकोनल लीजन्स के लिए हम यूज़ करेंगे. देन ऑर्बिटल फैट, जैसे मैंने बताया ऑर्बिटल फैट को ही ये सेप्टा जो है डिवाइड करता है इनटू सेंट्रल एंड पेरिफेरल. नेक्स्ट वी हैव एनुलस ऑफ द फाइब्रस रिंग है जहाँ से चारों हमारे जो इरेक्टाइल मसल्स हैं वो ओरिजिनेट हो रहे हैं. देन वैस्कुलेचर, जो ऑर्बिट की ब्लड सप्लाई है वो ऑफ्थैल्मिक आर्टरी से आ रही है और ड्रेन हो रहा है सुपीरियर ऑफ्थैल्मिक वेन से. नर्व जो है ट्राइजेमिनल से सारी इसकी सेंसिटिव सप्लाई है, एंड जो पेरी ऑर्बिटा है वो डेंसली सप्लाई होता है विद नर्व, सेंसिटिव नर्व. लैक्रिमल ग्लैंड जो है सुपीरियर टेम्पोरल लोकेशन में है, इसके दो लोब्स हैं, पैल्पेब्रल लोब है और ऑर्बिटल लोब है. एंड कोई भी लीजन होता है अगर लैक्रिमल ग्लैंड का वो इन्वॉल्व होता है तो वो आई को इंफीरियरली और मीडियली डिस्प्लेस करता है. These are all the nerves we can see that are passing through the annulus of Zinn in the superior orbital fissure, and out of this annulus of Zinn and which we have this inferior orbital fissure and the optic canal. Now we move on to the clinical features. So these are the symptoms that a patient can present with when she has orbital disease. पेन हो सकता है, लिड स्वेलिंग हो सकती है, कंजंक्टिवल स्वेलिंग, रेडनेस, वाटरिंग, प्रोमिनेंस हो सकती है, ऑक्यूलर देन देयर इज डिस्प्लेसमेंट हो सकती है, सनकिन आई भी हो सकती है, डबल विजन की कंप्लेन करेगा, ब्लरिंग, पल्सिंग सेंसेशन, ऑडिबल ब्लू. दीज आर ऑल सिम्टम्स दैट द पेशेंट कैन कम विद व्हेन ही हैज ऑर्बिटल डिजीज. साइंस, सॉफ्ट टिश्यू, अच्छा साइंस सारी वो चीज़ें हैं जो हम पेशेंट को एग्जामिन करेंगे तो हमने उसमें देखनी है. So we have to start soft tissue involvement है सबसे पहले. eyelid और periorbital edema हो सकता है, स्किन की डिस्कलरेशन हो सकती है, टोसिस हो सकता है, कीमोसिस हो सकता है, there will be epibulbar injection, and the soft tissue involvement होती है thyroid eye disease में, orbital inflammatory disease में, and when there is obstruction to venous drainage. This is a patient who has orbital cellulitis, and you can see that there is soft tissue involvement and the eyelid is swollen and tender and red. Tender तो इसमें नहीं पता चला, red पता चला. Then next we will be discussing proptosis. Proptosis exophthalmos एक बड़ा ही अच्छा symptom होता है जो हमें ऑर्बिट की डिजीज की तरफ लेके जाता है. Then it is detected by looking the patient down from above and behind. ठीक है, इसको हम कहते हैं Nafziger method. जो हम ऊपर से जाके देखते हैं, that is Nafziger method. In both the patients we can see that there is proptosis in this eye as well as in this patient we can see proptosis in the right eye. Obviously जब हम ऊपर से जाएंगे तो हमें सिमेट्री देखनी है कि दोनों आई इन्वॉल्व है या एसिमेट्रिक है या सिमेट्रिकली दोनों आई इन्वॉल्व है. Then how do we measure proptosis? We use an exophthalmometer to measure it. There is another method which we can see proptosis, and that is by the worm's eye view position, and we have to see it from the नीचे से उसको देखते हैं हम. ठीक है, in this patient there is right anophthalmos. Then this is a patient with thyroid eye disease with proptosis. There is another term that is dystopia, which shows displacement of the globe in coronal plane. एक तो एक्सियल प्रोप्टोसिस होता है, एक नॉन एक्सियल होता है. नॉन एक्सियल में आगे की तरफ भी आई आती है और कोरोनल प्लेन में भी मूव करती है. जो कोरोनल प्लेन में मूव करती है उसको हम डिस्टोपिया कहते हैं. We can see in this patient, this patient has axial proptosis and this one has dystopia. ये आई की बाहर की तरफ भी eyeball मूव हुआ है. This is a patient who had orbital tumor, and in this Nafziger method से हम ऊपर से तो पीछे से नहीं आगे से ही है ये. We can see proptosis in this eye, and here we can appreciate the dystopia.
देन सूडोप्रोप्टोसिस के केसेस में हो सकता है या तो फेशियल एसिमेट्री है जिसकी वजह से ऐसे फॉल्स इंप्रेशन आ रहा है कि प्रोप्टोसिस है, लिड रिट्रैक्शन की वजह से हमें लग सकता है कि आई प्रोप्टोस्ड है, ग्लोब इनलार्ज हुआ है हाई मायोपिक पेशेंट में बुफ्थेल्मोस में, उसमें सूडोप्रोप्टोसिस की पिक्चर हमें मिल सकती है। इसके अलावा कॉन्ट्रालेटर इनऑफ्थेल्मोस, जैसे हमने वर्ल्ड आई व्यू वाला पेशेंट देखा था अभी, उसमें राइट आई में उसको इनऑफ्थेल्मोस होगा बट अदर आई में सूडो एक्सॉफ्थेल्मोस हमें लग रहा था, सूडोप्रोप्टोसिस लग रहा था। Then what is exophthalmometry? Exophthalmometry is you measure the distance from the lateral orbital rim to the corneal apex. यानी कि ये जो साइड से हमारा डिस्टेंस है हम इसको मेजर करते हैं एक्सॉफ्थैल्मोमेट्री। इसकी वैल्यू 20 मिलीमीटर होनी चाहिए। एशियंस में कम होती है, अफ्रीकन में ज़्यादा होती है, हमारे में अपर रेंज हम 16 ही लेते हैं। एंड देन we can also compare the values of the two eyes, अगर दोनों आई में 2 मिलीमीटर से ज़्यादा का डिफरेंस है तो we call it relative. And uses, जैसे मैंने क्वेश्चन किया था कि how do you differentiate between proptosis and pseudoprotoptosis, so this is how you differentiate by measuring with an exophthalmometer. And it can also be used to monitor progression of a disease. कोई पेशेंट है उसका प्रोप्टोसिस चल रहा है तो आप उसको मॉनिटर करने के लिए यूज़ कर सकते हो। आउटकम ऑफ ट्रीटमेंट, जो ट्रीटमेंट दिया उसके बाद हमने चेक किया कि प्रोप्टोसिस बेहतर हुआ है कि नहीं, उसके लिए हम यूज़ कर सकते हैं। Then these are the types of exophthalmometers that can be used: Hertel's, Lewid and Nogel exophthalmometer. This is a picture of Hertel's exophthalmometer. इसकी जो ये साइड पे हैं दो, इसकी फुट प्लेट्स होती हैं, बीच में जो होती है ये क्रॉस बार होती है। क्रॉस बार को हम यूज़ करते हैं टू मेजर द डिस्टेंस बिटवीन टू बोथ द लेटरल ऑर्बिटल रिम्स एंड लेकिन जो मेन हमारा काम है टू मेजर द लेटरल ऑर्बिटल रिम टू द कॉर्नियल एपेक्स, वो जो साइड से होता है। इसमें प्रिज्म्स और मिरर्स वगैरह लगे हुए होते हैं, उसको मैं इतना डिटेल नहीं पढ़ा, बट वी कैन सी दैट दिस इज हाउ वी यूज़ इट। इसकी जो ये फुट प्लेट है इसको हम लेटरल ऑर्बिटल रिम पे रखते हैं एंड ये जो जगह है यहाँ पे पेशेंट की लेटरल आई की एक हमें इमेज नज़र आती है और फिर उसके थ्रू हम मेजर करते हैं। पिक्चर ऑफ दैट ऑल्सो वी कैन सी इन दिस पिक्चर कि यहाँ पे हमें पेशेंट की आई की एक इमेज नज़र आ रही है। आ रहा है सबको नज़र? ठीक है, यहाँ पे 2 रेड लाइन्स होती हैं, यू कैन सी 1 रेड लाइन हियर। तो ऐसी 2 रेड लाइंस होती हैं, तो एक प्रिज्म है, हम सबसे पहले उन दोनों रेड लाइंस को अलाइन करना होता है, मूवेबल होते हैं प्रिज्म, तो वी हैव टू अलाइन देम टुगेदर एंड देन ये कॉर्नियल एपेक्स तक जितना आ रहा होता है ना हमारा, क्योंकि ये तो हमारा लेटरल ऑर्बिटल रिम पे हमने फुट प्लेट तो रख दी है। नाउ विद द हेल्प ऑफ कैलिब्रेशंस वी सी जहाँ तक एपेक्स आ रहा है दैट इज गोइंग टू बी आवर डिस्टेंस। इस पेशेंट में 14 मिलीमीटर है विच इज़ नॉर्मल। सिर्फ ब्लू लाइन बता रही है कि एपेक्स कहाँ है, कॉर्नियल एपेक्स। ये रेड कलर के साथ जी सर मिक्स करते हैं ना, तो आप नीचे वाला प्लेटफॉर्म जो है वो मूव करता है। जी सर मूव करते हैं, बिल्कुल उसके उसको आप एडजस्ट करते हैं उस लाइन के साथ अंदर। बिल्कुल सर ऐसे ही। हमारे पास है तो मैंने मंगवाया। इसमें 2 डिज़ाइन आते हैं जी सर, दोनों बहुत अच्छे हैं। उसमें तो ये जो छोटे वाले डिज़ाइन है ये बहुत कन्वीनियंट होता है, जो बड़ा वाला डिज़ाइन है वो है बड़ा लेकिन उसकी पोजीशन बहुत अच्छी है। एंड दिस इज लुइड एक्सॉफ्थैल्मोमीटर। इसका मैकेनिज्म बड़ा सिंपल सा होता है कि आप उसको साइड पे लेटरल ऑर्बिटल रिम पे रख लो और जहाँ तक एपेक्स आपको नज़र आ रहे हैं वहाँ स्केल से सारी मेजरमेंट्स करके यहाँ एपेक्स तक हम मेजरमेंट देखेंगे। देन दिस इज नॉगल एक्सॉफ्थैल्मोमीटर। अब कोई पेशेंट है जिसकी सर्जरी हुई है, कोई ट्रॉमा हुआ है, जिसका लेटरल ऑर्बिटल रिम इंटैक्ट नहीं है ड्यू टू डीकम्प्रेशन सर्जरी, थायराइड आई डिजीज हुई है, ऑर्बिटोटमी हुई है लेटरल, तो उसमें फिर हम वी कैन यूज दिस नॉगल एक्सॉफ्थैल्मोमीटर। ये एंटीरियर और ये सुपीरियर और इंफीरियर ऑर्बिटल रिम की मदद से ना हमें बताता है प्रोप्टोसिस। दिस इज अ पिक्चर ऑफ दैट एक्सॉफ्थैल्मोमीटर, नॉगल एक्सॉफ्थैल्मोमीटर। Then there is another method with which we can measure proptosis. इसमें हम एक पेशेंट का सीटी स्कैन कराते हैं। सीटी स्कैन में रिक्वायरमेंट ये है कि पेशेंट का लेंस नज़र आना चाहिए दोनों जगहों पे, यहाँ पे भी बोथ साइड्स पे, यहाँ पे भी यहाँ पे भी। Then we draw a straight line connecting both the lateral orbital rims. जब लाइन कनेक्ट हो जाती है फिर हम एक और लाइन बनाते हैं कॉर्नियल एपेक्स से परपेंडिकुलर,
जो इस लाइन के ऊपर आती है, एंड देन वी मेजर दिस डिस्टेंस। इसमें हम कोई वैल्यू नहीं रखते कि कितना होना चाहिए, वी हैव टू कंपेयर बोथ द आईज। ज़्यादा डिफरेंस होगा तो फिर वी कैन से दैट proptosis है। Then there is anorthospermos, which is recession of the globe within the orbit. The causes can be orbital wall anomalies, atrophy of the contents, or sclerosis of the contents. Then there can be pseudo-anorthospermos, which is small shrunken eye, and it can be due to microphthalmos, thysis bulbi, ptosis की वजह से भी pseudo-anorthospermos की एक पिक्चर हमें लगती है, and contralateral proptosis की वजह से। This is a patient with proptosis and with ptosis, sorry. This is a patient with ptosis, and we can see that ऐसी appearance आ रही है कि इसकी left eye में anorthospermos है, but वो pseudo है। हाँ। Then we have ophthalmoplegia. Ophthalmoplegia is defective ocular motility, muscle involvement की वजह से भी हो सकता है, nerves involvement की वजह से भी हो सकता है, and कोई mass है जो compress कर रहा है, restrictive myopathy है, orbital myositis है, muscle आपस में attach हो गए हैं, tensor हो गए हैं, then there obviously nerve involvement की वजह से भी हो सकता है। Then types of ophthalmoplegia, restrictive हो सकता है, neurological हो सकता है। Then these are the three tests with which we can distinguish कि patient को restrictive है या neurological है। सबसे पहले forced duction test, ये तो general anesthesia में होता है। हम patient की eye को move करके देखते हैं with the help of a forceps after patient is gone into general anesthesia। अगर वो eye move करती है तो फिर it is neurological, अगर move नहीं करती तो फिर restrictive। Then we have differential intraocular pressure test। इसमें हम patient की primary position में IOP लेते हैं और जिस साइड पे restriction या palsy होती है patient को उस तरफ दिखा के फिर IOP लेते हैं। अगर 6 मिलीमीटर जो mercury difference आ रहा है तो फिर it is restrictive। restrictive में IOP raised होगा in the position of abnormal gaze, और इसको हम कहते हैं Braille sign। Then there is saccadic eye movement। हम saccadic eye movements करा के देखेंगे, वो neurologic involvement जब होगी तो saccadic eye involvement patient की खराब होगी। Then the dynamic property is increasing venous pressure। obviously कोई भी mass है या कोई भी ऐसी चीज़ है जो veins को compress करेगा तो venous pressure बढ़ जाएगा, pulsation हो सकती है, रूई हो सकती है, these are all the signs of orbit disease। Fundus changes, optic disc swelling, atrophy depending on optic nerve की compression है वो अभी है या long time से चल रही है। There will be optociliary collateral choroidal folds। Then how will we approach a patient who has orbital disease? सबसे पहले हम उससे onset पूछेंगे कि कब से आपको चल रहा है, course पूछेंगे, then duration of symptoms पूछेंगे, prior disease तो नहीं है, thyroid eye disease या sinus disease तो नहीं है, या फिर therapy आपने radiotherapy आपकी तो नहीं हुई, then injury हम इंजरी की लेंगे, कोई फेशियल हेड ट्रॉमा तो पहले आपका नहीं हुआ, सिस्टमिक कंडीशंस, कैंसर, इन्फ्लेमेटरी डिजीज, कैंसर मेटास्टेसिस देखने के लिए कैंसर की हिस्ट्री लेंगे। एंड वन मोर थिंग वी कैन डू इज वी कैन एज द पेशेंट फॉर ओल्ड फोटोग्राफ्स फॉर एस्टैब्लिशिंग अ टाइमलाइन ऑफ द प्रोसेस कि कितने स्पीड से उसका बढ़ रहा है। देन इन्वेस्टिगेशंस, CT स्कैन हम वी ऑल नो दैट वी डू इट फॉर बोनी स्ट्रक्चर्स। इसके अलावा अगर कोई ऑर्बिट के अंदर ही कोई स्पेस ऑक्यूपाइंग लीजन है उसकी लोकेशन और साइज देखने के लिए वी कैन गो फॉर अ CT स्कैन। ऑर्बिटल एक्सिस के लिए ट्रॉमा के बाद भी हम ऑब्वियसली बोन है तो फ्रैक्चर के लिए हम करा सकते हैं। इसके अलावा फॉरेन बॉडी अगर कोई है तो उसके लिए हम CT स्कैन करा सकते हैं। हर्निएशन ऑफ एक्स्ट्राओक्युलर मसल्स के लिए वी कैन गो फॉर CT स्कैन। एम्फाइसीमा के लिए जितना भी पेरी ऑर्बिटा और लूज स्ट्रक्चर्स के अंदर एयर ट्रैप हो जाती है दैट कैन ऑल्सो बी सीन विद CT स्कैन्स टू द एम्फाइसीमा। देन MRI जो है, अब जो CT स्कैन है वो एपेक्स के लिए इतना अच्छा नहीं है, उसके लिए देन वी हैव टू गो फॉर एन MRI। इसके अलावा अगर हमें देखना है कि इंट्राक्रेनियल अगर कोई लीजन जा रहा है तो उसके लिए भी MRI इज अ वेरी गुड ऑप्शन। ऑर्बिटल इन्फ्लेमेटरी डिजीजेस के लिए वी कैन गो फॉर MRI। एंड देन MRI की सीरियल शॉर्ट T1 inversion recovery scans होते हैं, स्टर इमेजेस होती हैं, दैट वी डू फॉर थायराइड आई डिजीज। Then there is a comparison of CT scan and MRI and orbital disease. So as we just discussed that CT scan is a good technique for most orbital conditions, यानी ऑर्बिट के अंदर जितनी भी चीज़ें हैं उसके लिए CT scan is a good option, स्पेशली ट्रॉमा है। वेयर एज अगर ऑर्बिटोक्रेनियल जंक्शन या इंट्राक्रेनियल इमेजिंग आपने करनी है तो फिर MRI इज अ बेटर ऑप्शन देन बोन एंड कैल्शियम का CT ज़्यादा अच्छा दे रहा है, MRI CT बोन और कैल्शियम का इतना अच्छा नहीं दे रहा है। इसके
इसका CT स्कैन का एपेक्स का लिमिटेड डेफिनेशन देता है, वो एपेक्स के लिए अच्छा है, सॉफ्ट टिश्यूज़ के लिए अच्छा है। देन इसकी जो बेटर CT स्कैन की बेटर स्पेशियल रेजोल्यूशन है, मतलब जो ओवरऑल इमेजेस आती हैं हमारे पास स्कैन्स में, CT स्कैन की बेहतर होती है, वो बेटर रिजॉल्व होती हैं एज कम्पेयर टू MRI gives more soft tissue detail। बाकी जो है वो जनरल कंपैरिजन है बिटवीन CT एंड MRI और विद रिलेटेड इश्यूज के की 4-5 थे। ये सारी जनरल MRI के जनरल CT MRI के बाद में है कि कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन प्रेगनेंसी है CT, और वो बच्चों में भी और प्रेगनेंसी में भी कर सकते हैं। CT स्कैन लेस एक्सपेंसिव है, वो मोर एक्सपेंसिव है। CT स्कैन इज लेस क्लॉस्ट्रोफोबिक, लेजर पॉइंटर है उसको यूज करें। लेस क्लॉस्ट्रोफोबिक एनवायरनमेंट है फॉर CT स्कैन, वेयर एज उसके लिए इतना ज़्यादा ये प्रॉब्लम नहीं है। Then this is a patient of this is a CT scan of a patient of the orbit, and we can see that it is demonstrating normal anatomy. The first one is this is the axial view, and this is the coronal view of the patient. So हम देख रहे हैं CT scan में that all the bones are very nicely appreciated. इसमें what are the things you are looking for in a CT orbit? Let's say this is a case of thyroid eye disease. So what are the features that you should look for especially? Sir, extraocular muscles देखेंगे Okay. और क्या देखें extraocular muscles? थिकनिंग कैसे पता चलेगा थिकनिंग है कि नहीं है? What is the criteria? What is the normal diameter of muscle? So you compare it with optic nerve. Normally the muscle should be of the same caliber diameter as that of optic nerve. It is. So how will you compare? See, वो आप पॉइंटर जहाँ पे कर रहे हैं ना, वहाँ ऑप्टिक नर्व भी नजर आ रही है, मसल भी नजर आ रहे हैं. That gives an indication muscles are enlarged or not. And then in the coronal view पे देखिए, central spot is of optic nerve and the surrounding are the muscles. So if the muscles are enlarged, you can appreciate which muscle is enlarged. The coronal view is very helpful. So this is one thing you will be looking for, diameter of the muscles. Any other point? You just mentioned proptosis. So to detect the proptosis, you have mentioned one thing that we draw a line in the lateral orbital margin, and then we appreciate which eyeball is protruding forward. The other way is you align the two orbital margins and see how much of the eyeball is in front of the line. See, normally 1/3 of the eyeball is in front of the line. So if more than 1/3 is in front of the line joining the two orbital margins, then this is proptosis. Third thing is that the optic nerve, as you mentioned, has a sinus course like this. It is more in the length than the orbital length. So if the optic nerve is straightened, वो रस्से की तरह खिंच गई है, so this is also an indication that there is proptosis. Eyeball is forward. Then in extreme cases you will see tenting here. The eyeball is fixed, the optic nerve is fixed to the sclera, the eyeball is pushed forward, so you will see a concavity. This tenting tells you that the optic nerve is stretching the sclera out. Then you see this is the orbital fat. The volume of the orbital fat is sometimes the muscles have not enlarged yet. Only there is increase in the mucopolysaccharide and the fluid content of the orbital fat. So you will see a changes. This intensity of the orbital fat should be same as that of the air in the ethmoidal sinus, in the maxillary sinus and the outside ear. So if this blackish shadow is somewhat whitish, it means there is accumulation of mucopolysaccharide. So the black discoloration of the orbital fat should be identical to that of water or air.
These are a few signs that you will see in a CT scan of thyroid eye disease. Okay. Then this is TU1 weighted MRI images of the orbit with fat suppression, and we can see इसमें bones इतनी अच्छी prominent नहीं है, but we can see all the soft tissue very well. Extraocular muscles इतने अच्छे नजर आ रहे हैं, nerve भी नजर आ रही है. Then this is a CT scan of a patient with proptosis due to hemorrhage. ये जो है ना, ये सारा हेमरेज पड़ा हुआ है इस पेशेंट में, एंड वी कैन सी दैट सर ने भी बताया अगर हम यहाँ पे एक लाइन रखेंगे कनेक्टिंग द टू ऑर्बिटल मार्जिन, तो हमें 1/3 से ज़्यादा ही आगे प्रोक्टोज हुआ हुआ है. एंड इफ वी ड्रॉ अ लाइन फ्रॉम बिटवीन द टू लेटरल ऑर्बिटल मार्जिन एंड देन अ परपेंडिकुलर लाइन, इसमें भी इसका डिस्टेंस ज़्यादा है इस वाले राइट साइड. Then plain X-ray we only use it for initial diagnosis when there is a traumatic bony injury of the orbit. Then arteriography, अगर कोई arterial lesion है orbit के अंदर तो उसके लिए arteriography जो है वो gold standard है. Arterial lesion can be aneurysm, arteriovenous malformation, and one benefit of arteriography is simultaneously इसमें diagnose भी हो सकता है और embolize भी कर सकते हैं. Fine needle biopsy can also be done if there is suspected neoplastic disease, but it has some potential complications like hemorrhage and ocular penetration. Then there is this technique, stereotactic navigation. इसमें computer assisted 3-dimensional navigation हम करते हैं, but वो multidisciplinary surgeries होती हैं जिसमें कोई orbital lesion हो, तो in that case we are using it. अगर सिर्फ orbit की कोई surgery है तो उसमें we don't use this. ये बहुत अच्छी पिक्चर I found, ये 3D images ले रहा है ये, साथ में हम it is happening while surgery and we can see that ये approach हम कर रहे हैं and then it is guiding us by giving us 3-dimensional images. Then MCQs नहीं है, एक ही MCQ है. A full thickness stab incision located 11 mm superior to the eyelid margin over the pupil in the upper lid, and it would be close to each of the following structures except lid margin. References है